Very warm welcome to all those who are joining this. So today's topic is basically how to make a strategy or maybe a strategy for UPSC exam, right? So we'll go into details of it one by one, and as you can see on your screen, it is a seminar on decoding UPSC exam. So basically, you may call it as decoding or you may call it as a strategy, that is up to you. So let us go into details one by one here. And I am presuming or assuming the fact that those who are listening to this webinar, some of them or probably all of them must be very well aware about the scheme of exam, the papers which UPSC has prescribed. So we have 4 GS papers and then one optional subject along with an essay. So that is a brief idea about what mains exam is. So far as prelims is concerned, so in case of a prelims, we have 2 papers, one is GS and the other one is of CSAT. Our objective today is not to go into details of what scheme of exam is, but the objective is to look into the aspects of how one can prepare or what strategy one can follow so far as UPSC exam is concerned. And now, as you know that even UPSC is on the way to change the syllabus and change the mode. So let us understand to what extent can we, what all things can you get out of this webinar today. So what we have here on slide number 1 is basically nature of exam, being more particular, mains exam you can say, or for that matter UPSC as a whole. So here you can see that the exam is basically objective. And what are expectations of such objective exam? Objective of the exam kya hai? So basically, it is to test the knowledge, ability to link different concepts and application of conceptual understanding. Subjective exam ka matlab kya hota hai? How you look at the subjective exam? It is to test the comprehension and ability to think and present varied aspects of the issue under discussion with substantiations, right? And then one more thing is management skills. So let me just elaborate on these points a little bit more for your understanding. So when we look at objective exam, that is prelims, right? What is expected here in objective exam? It is basically to test the knowledge. And if you know, like recently, if you have seen the prelims question paper, you must be knowing that it was altogether on a different level. Like people have found it a bit difficult to deal with prelims. So yes, it is definitely a test of knowledge, no doubt about it. But then it is not only knowledge that helps you while you sit for exam and are planning to crack the same. So objective exam also tests your knowledge as well as objectivity, as well as your focus, and to what extent can you process that acquired knowledge and then apply it in your exam, right? So that is the most important skill that one need to acquire when it comes to prelims or when it comes to any objective exam for that matter. So here we are talking about an objective exam. An objective exam, particularly in UPSC's case, is prelims. And prelims is testing your knowledge, definitely. Then ability to link different concepts. Now, this is something which is very interesting. Now, if you look at the question paper, previous year question papers, right, you will get to know that UPSC expects in one single question, UPSC expects from you that you have, you have a very thorough understanding of the concepts and you can apply them in a better manner so far as question is concerned. So linking different concept means what? Linking different concept means basically the question itself will be a group of different concepts, and that question expects you to borrow from different concepts or different areas and then accordingly choose a particular correct answer when it comes to ability to link different concepts, right? We'll go into a little bit of details of this in today's webinar in coming slides. Then application of conceptual understanding. Now, what do you mean by application of conceptual understanding? Again, prelims expects you to be not just read and mug up the things, right? But then you'll find that ultimately they'll ask you questions which will make you apply the knowledge. Like for example, economy, questions from economy, or maybe questions from polity also.
So let us take an example of economic question. So we'll find that they happen to ask question on if there is inflation in market, right? Which one of the following possible options would be utilized by RBI to contain the inflation? Now this is something wherein you need not, you just knowing the fact that there is, or knowing the fact that inflation means this and these are possible options with the RBI, to contain the inflation is not enough. But then in given situation, right, which particular option will RBI use to contain the inflation is something where you are basically applying the conceptual understanding, right? So application of conceptual understanding is basically, or I would say that it is one of the most important factors of prelims. Almost 70 to 80% questions you'll find that wherein you will have to apply the concepts, or wherein you will have to use your understanding of the subject, and then only you'll be in a position to solve those. So objective exam, when we look at, is going to test your knowledge. It is going to test your ability to link different concepts, and it is also going to test your ability to apply the conceptual understanding in those 2 hours. So when we look at why people find prelims that way very tough, if you ask me a question, my answer is very simple, that the approach, the way we prepare for prelims itself is not up to the mark. Like what we do, we read basic books, right? Then what we do, we keep solving question papers, right? So that we are under assumption, or maybe false assumption, I would say, that we, because have practiced so much, we will be able to clear the exam, but we have not practiced what exam demands, right? So what exam demands? Exam demands basically application. Exam demands basically the objectivity. So mugging up things, reading things, revising them is not enough. So you will have to understand the fact that exam demands your knowledge, and that too in an application manner, right? So what is expected then? It is expected that you read previous year question papers on a daily basis, right? Not just analyzing them and keeping them in a cupboard, then for in an incubation period for complete year is not going to solve your problem. So, or maybe any issue. So what is expected? It is expected that we must go through the concepts. Definitely. See, if you look at this testing knowledge, that means you must have the understanding of basic concepts, no doubt about it. Then what? Ability to link different concepts. So for this, you have to have a processing of that particular knowledge, and then application is equally processing. So where we lack so far as prelims is concerned is basically processing of things which we read. So we generally don't process things. What we do is we just follow the train, because people have been doing it through current affairs, or people have been doing it through test series and all. So we are under assumption that because we have joined the test series, we will definitely get through. So that won't happen. Joining test series and getting marks in test series, or standing first all India rank or whatever, there are several test series, those who declare your ranking and all, or marks and everything. What, that is not going to serve the purpose. What serves the purpose is basically your individual preparation, and then your individual attitude towards exam. How do you look at exam, and then how do you prepare for the same, right? So application oriented and ability to link different concepts is something which is at the core of prelims, right? Now let us talk about subjective exam. Again, in brief, as I said, like we'll talk more about strategy today. So when it comes to subjective exam, it is basically to test the comprehension and ability to think, and present the varied aspects of the issue under discussion. Now, what do you mean by this, and why, and how do you prepare for this? Basically, when when you come across a question in mains, what is expected? The expected thing is that you understand the question first, and then bring about different dimensions of that issue in the question on paper. What generally happens is we understand question the way we want, and we only write things which we know, and so you won't be scoring the marks in such case. So what is expected in mains is basically to understand the question, then in expected manner come up with different aspects on that particular matter. For example, the anti-defection law is in news recently, right? It is going on. So if you look at anti-defection law and just go through previous questions, you'll find that there would be definitely some other question asked by UPSC. Now just go through that question and draft. What you need to do is draft the aspects. What aspects do we need to follow, right? So this is to write an answer for that question. So aspect wise, you will have to prepare.
आपको जब पढ़ाई करोगे आप, तो आपको एस्पेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना है। किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक मैटर को, किसी एक इशू को, है ना, जो करंट में आता है या फिर जो क्वेश्चन पेपर में आएगा, उसको समझना एक बात है ना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना एक बात है, लेकिन उसको लिखना एक दूसरी बात है। तो लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पहली बात तो आपके पास बिल्कुल क्लियर कट कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। जस्ट at the first place, when it comes to writing, जब हम लोग राइटिंग की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंड करने आना चाहिए क्या क्वेश्चन है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द इशू, राइट, इफ यू कैनॉट कॉम्प्रिहेंड इट, forget about writing. You cannot write. It is so simple as that. And then there are people who say that, so no sir, I have actually attended complete paper, all 20 questions in all GS papers and even optional subject, and I wrote essay also very fabulously, right? However, I still not finding myself in the list, right? What is the matter? What is the matter if you attempt all the questions and still you are not finding your place in the list? The reason here is, most probably the reason is, you have not answered the questions, you know, in an expected manner. You simply try to fill the papers and you simply try to write whatever you know, but what they expect is the aspect that is asked in the question. So if you could manage to, so what do you need to do for that? You basically need to first, you know, have a clear cut comprehension, one, of issue, right, and second is of question. These two things are really very important. So if you look at now, let us again take an example of anti-defection. At this moment, if you're going through newspaper, you know that there are several articles in the newspaper on anti-defection. So anti-defection is an issue for us, and that probably may appear in the exam also, because that is a part of our syllabus, right? Now the question is, if you look at the questions which UPSC has asked already, or maybe practice questions if you're trying to solve, what is required? You know the issue very well, but what if you don't understand the question? Even if having that knowledge or having all those aspects which you can actually write, you know, still you will find yourself not in a position to write an answer, justifying answer for that question. So knowing an issue, again, or comprehension is not enough. So knowing the issue is not enough. What you need to do is, you also need to understand the question, and accordingly you need to, or you may be in a position to, you know, write the aspects. Now, why are we discussing these things in these details? The reason being, if at all you are thinking about any strategy for UPSC exam, what that strategy should first understand as a prerequisites. Any strategy that you are going to define or maybe design for yourself must understand the need of exam and must understand where you are lacking, right? So I feel, right, this is where almost all of us lack. We don't understand the nature and demand of exam properly while we make a strategy. We make a strategy for reading. We make a strategy for completing syllabus. We don't make strategy for addressing exam. So there is basic flaw in our strategy making. Whether you are addressing the examination or you are simply addressing syllabus and completing it and thereby getting psychological satisfaction. No, sir, I have completed my syllabus. But whether you did complete the syllabus as per the expectations of the exam or not is the biggest question when it comes to strategy making, where I feel that there is no link between what do you prepare out of syllabus and what UPSC asks in exam. So any strategy that you are going to define or design for yourself must make sure that your strategy indispensably includes the demand or addresses the demand of the exam, and otherwise there won't be any strategy. So if you are listening or if you are willing to get something out of today's lecture, my question or my thing is, first see what you are targeting. Are you targeting syllabus or you are targeting exam? That is the first point that you need to understand, right? Then only we can talk about, you know, time management and time management skills and etc. Right? So I'll focus more on this now, the strategy and plan, overall plan and etc. But please make sure that you you know, focus on or you include the aspect of examination in your strategy and not just completion of syllabus as a part of your strategy. Completion of syllabus is by default going to be an important aspect, right? If you don't complete the syllabus, how are you going to write, or maybe how are you going to appear in exam? But then just completing syllabus, you know, reading things and
even preparation from current affairs. So no, sir, every day I write my notes of newspaper and still I couldn't manage to clear the exam. Your sincerity in completion of syllabus, right, is acceptable. But then are you sincere even about what exam asks, and are you linking your complete process of completion of syllabus and studies with the demand of exam? If you are not, then any strategy that you follow is not going to work. It is so simple as that, right? So let us move to the next part. We will now talk about important aspects today in today's seminar or webinar. So we have strategy for examination. So main components are planning, then revision, previous year question papers, test series, and then some of the psychological aspects which we may need to discuss at the end. So let us go into these details one by one. Yes, so here comes the first important part of our discussion today, and that is planning for prelims. Okay. Now, please consider that here we are talking blending this planning with the expectation of exam. So you will have to accordingly prepare yourself. Now, generally it is seen that prelims, UPSC conducts prelims somewhere in May, right? Or maybe June first week. It depends, right? May or June. So next year it is May, right? So month of May is our target. Let us say those who are going to appear for next year. So month of May is our target, right? So I believe that around 6 months or so, one must dedicate for preparation of prelims, around 6 months. And in some cases, probably even that is not sufficient. In some cases, probably that is also not sufficient. So what one can do is, if we look at next year's preparation, and particularly focusing on prelims, one may blend prelims with mains. So let us say from Monday, Monday to Saturday, and then if you keep your Sunday separate. So Monday to Saturday on a daily basis, you may read or you may prepare for your mains. And here I am talking about from say July onwards till November. We will talk about mains in a while, but then so Monday to Saturday you can prepare for your mains. You can read newspaper, from mains perspective, from Monday to Saturday on every day, and you keep Sunday exclusively for prelims. Now onwards also, from July onwards, every Sunday you will prepare for prelims. Take all those newspapers which you have studied or which you have gone through from Monday to Saturday again on Sunday. Go through every newspaper, only from prelims perspective. So full Sunday is to be dedicated for prelims, and only through newspapers. Now this applies to those who have already prepared for a year. This applies to those who have already given the attempts and those who have those who have good approach of exam. Only for them this particular type of preparation may work. So every Sunday henceforth till November end is to be absolutely or fully dedicated for the preparation of prelims. And what you need to do in this is my suggestion. It is up to you, like whether you want to follow this or not. But then, because see, one model fit all can never be the correct idea, right? So in my opinion, I feel like Sunday can be kept exclusively for prelims, right? And what is expected, those who have already given the attempts, those who have been preparing for last 1.5 years, 2 years or 3 years, whatever, what can they do is on every Sunday take newspapers, right, and take 2022 prelims question paper and 2021 prelims question paper. Take these papers and sit with the paper. You need not to analyze them, write something and keep it ready. While you are reading newspaper on Sunday, go through the 2022 prelims question paper line by line. See what type of questions are they asking. And this you have to do on every Sunday. Even if you are now almost by heart with the question paper, still do it every Sunday. It will hardly take any time. And you have full Sunday doing nothing, doing only or preparing only for prelims from newspaper. Look for the concepts. What has been asked? Now you are, that's why I say, like, those who are already preparing for UPSC exam in last 1.5 or 2 years or so,
right? I'm talking about them. I'm not talking about freshers. I'm talking about those who have been already preparing for 2 years, those who have given the attempt, what they can do, because they know the subjects now, because they know the scope of exam now. They even know how the current affairs to be, to be filtered, right? You can do this on every Sunday. Sit with it, right? And jot down the points. But then these points to be jotted down only and only for prelims. Henceforth, every Sunday for prelims till November end, right? And Monday to Saturday, you prepare for prelims. Now that will help you, get relief from the excessive material that you suddenly come across once you go into the prelims mode. So why not to stay in the prelims mode right away, right from the first month itself of your preparation? So if you are now planning for 2023 prelims, right, be in the prelims mode on every Sunday. Because see, prelims is that volatile now. Prelims is that challenging now, right? Even CSAT, there are people this year being more particular. There are so many of them, those who have, those who couldn't clear only because of CSAT, and their GS scores have their GS scores are really good. So CSAT is also becoming challenge, and it's not difficult. See, it's not difficult. It becomes difficult, and we fail only because we take it for granted. So maybe for CSAT, you can start from November onwards, when you will exclusively prepare for your prelims. Include CSAT as a part and parcel of your preparation. Maybe 2 days a week. To plan for prelims, in my opinion, I'm saying that exclusive preparation of prelims must start, or maybe may start, from December onwards, December to May or June, around 6 months, right? And then components for preparation. What are components? You have current affairs, then basic and practice question papers. So 2 to 3 tests per week we are recommending, or so around it should come out to be around 70 to 80 question papers. You are doing it diligently, and then completing it. That should be helpful. But then now the question is how to complete it. Like there can be online students, those who say that, sir, ये तो हम लोग कर रहे हैं कितने सालों से, 70 क्या 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से, टेस्ट सीरीज देने से प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ टेस्ट सीरीज देके सेटिस्फाई जो लोग होंगे, वो आप समझ लो कि आप उतने में प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आए। टेस्ट सीरीज तो आपको देना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप दो ही, प्रैक्टिस करो ही उसका। लेकिन उसके साथ साथ क्या आपने टेस्ट सीरीज को वो एस्पेक्ट से देखा क्या, जिस एस्पेक्ट से यूपीएससी शायद क्वेश्चन पूछती है? क्या आपने टेस्ट सीरीज को सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो करना रहता है, टेस्ट सीरीज में मेरा ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट होगी, ये कारण से अगर टेस्ट सीरीज देंगे हम लोग, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें we will be in a position to get crack, right? But then yes, of course, these are some of the important components or basic components of prelims ka preparation, right? So what we have current affairs, what we have basics, and what we have is question papers. As I said, for current affairs, you can target the current affairs right away from July 1st weekend. Every Sunday focus on, हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे वो संडे। आपको लग रहा है नहीं सर संडे को आई नीड रेस्ट, टेक सैटरडे। You deserve rest, no doubt. If you have been seriously preparing, no problem. Saturday pakde, half of the Saturday, half of the Sunday. Sunday evening you can relax if you want, but see to it that one complete day you are dedicating for prelims, and that too only from newspaper. And then don't simply jot down notes and points from newspaper which you think are important for prelims. No, while you jot down the notes, take the question paper and read that question paper every time when you are writing down something on your. It will take time initially. First few Sundays you'll find it really very tiresome and problematic, but then later on you'll find it is easy, and you can keep separate book only for prelims. There are compilations coming, right? There are different classes, those who come up with the compilations of news. Add those compilations to your notes later on, but see to it for prelims you draft your notes every Sunday. I think this much prelims definitely deserve. इतना तो आपको prelims के लिए बिल्कुल करना चाहिए। prelims को हम लोग इससे ज्यादा, मतलब इससे कम करोगे तो शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग prelims को फिर granted ले रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा 2 महीने में, हो जाएगा 6 महीने में। ऐसे नहीं है,
अगर आप रेगुलरली उसको प्रिपेयर करोगे तो आपको फिर बाद में वो बर्डन भी नहीं लगेगा और वो आसानी से आप कर पाओगे, राइट? सो दिस इज अबाउट दीज कंपोनेंट शेड्यूल. I would suggest you to make a macro planning for a month, right? जिसमें आप months मतलब monthly, so 3 slots, 2 months each, as I'm saying, like from July onwards. तो वो हम लोग continue करेंगे prelims, but the moment we start with December, है ना? So December and Jan, then Feb and March, April and May, as I have given here. So first slot, I don't think that, I'm just suggesting you. You may split it in a month, on a monthly basis. You may create 3 months, but this is, I feel, much better. Slots of 2 months, basic concepts and current affairs, December to January. In 2 months, if you are already done with the classes, if you are already preparing for last 2.5 years or maybe 1.5 years or so, you can definitely cover your basics in 2 months. What you need to complete for prelims: polity, history, geography, economy, science and tech, and environment. These are basics I'm talking about. I'm not talking about current year, right? So you sit every day for 7-8 hours, fully focused on basics, and then remaining 3 to 4 hours on current affairs. So every day, if you make a schedule of around 12 hours, right, I think that is sufficient. You still have 12 hours left with you, wherein you can enjoy your day, and that is not difficult at all. You just need to see to it that you are up to it. Right? So 12 hours a day is something that you can definitely manage to work December onwards if you're really willing to get. Yeah, so 7 to 8 hours you can definitely dedicate. I would say 8 hours, for reading and completing and revising the basic concepts. So for this, you may use your NCERT books or notes or maybe reference, whatever, whichever book you think. Let us take an example of Lakshmikant if you want, right? So how much time it will take for you to complete Lakshmikant if you're sitting for 8 hours a day, and if you're already done with the classes of people, if you have already gone through Lakshmikant for 1 or 2 times, how much time it will take? I don't think it will take more than 10 days. So it is just a matter of week. That's what I'm saying, right? 8 hours a day, and if you're sitting for a week, you will be done with the Lakshmikant. Right, and that 2 important topics. I'm not saying that read it line to line and page to page. No, not required. See what UPSC is asking in prelims. Only those topics you can cover. Similarly, same applies to history, same applies to geography. Probably some subjects may take a little more time. Ultimately, how many subjects do you have? You have 6 subjects to deal with. Am I correct? So 6 subjects can definitely be dealt with in 2 months, and we are only talking about basics. So around 8 hours a day, if you can manage to focus, December onwards on basics, it is definitely possible. Not impossible at all. And if at all it happens that you couldn't manage to complete it by December end, right, you may stretch it a little bit in the next month. Take 7 days or maybe a week as a buffer and then accordingly complete it. Right. So current affairs plus basics should be in the first slot. Second slot, revision of basics. Here you won't, you're not going to put in a lot of efforts here when you are revising. Revising won't take 8 hours a day for revision, right? So revision of basics and practice tests, February and March. Now, what do you mean by practice tests and what you are expected to do is, say you are reading history, modern Indian history, let's say. Now, what can be done is you're reading modern Indian history or revising modern Indian history basics from your books for 6 days or maybe for 5 days is your target. All these 5 days, you take practice test paper, which are sectional test paper for history. So history का sectional test paper करो, उसका revision करो. Go to books, see where you go wrong and revise it. Are you getting it? Right. So that will definitely help you to strengthen or consolidate the subject which you prepared in your first slot. यहाँ पे जो आपने किया ना पहले slot में, उसको आप यहाँ पे revise कर सकते हो, उसको consolidate कर सकते हो February and March. And this should also take around 8 to 9 hours a day. You still are left with around 3 to 4 hours. What you will do currently? And please remember, our Sunday is still for that exercise which we started in July. And we will keep doing Sunday, all newspapers in similar manner.
and daily you are preparing for current around for 4 hours or 3 hours on a daily basis along with your basics. So you are solving question papers, you are reading current on daily basis, you are also doing your basics. What is left then? Almost nothing. There is one thing that you need to stick to on a daily basis while you practice question papers, and that is previous year questions. 2022 being more particular and 2021 also. ये क्वेश्चन पेपर्स को देखो, 2020 भी ले लो आप, इसको देखो, देखो वो क्या पूछ रहे हैं, देखो किस तरह से क्वेश्चन होता है, क्यों 7 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा, उसमें क्या डिफिकल्ट था क्या वो, ये आप देखो, मतलब क्यों इस तरह का अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्यों होता है किसी एक आंसर में, है ना, और सॉरी किसी एक क्वेश्चन में, इसको आपको देखना है कंटिन्यूअस। प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते वक्त अगर आप ये नहीं करोगे तो आप समझ लो कि आप सिर्फ आपको यू आर सिंपली मेकिंग फूल आउट ऑफ इट by planning and by executing it diligently. Makes no sense. क्वेश्चन पेपर्स को साथ में लेके चलना है, तभी शायद कोई फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज आपका प्रिपरेशन वैसे ही होगा जैसे आप पिछले 2, 3, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, किसी का प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया unless and until we make changes. Third slot, revision through test papers or test series and revising current affairs, अप्रैल and मई। अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग बेसिक्स का, हम लोग बेसिक्स फिर भी करेंगे, मतलब क्या, हमने टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे ना नवंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर ऑनवर्ड्स, we are saying at least 2 to 3 test papers a week, right? बहुत सारा सॉल्व हो चुका रहेगा हमारा तब तक, वही उसी टेस्ट सीरीज का रिवीजन करो आप। अच्छा, हमारे पास कितने महीने, यहाँ पे हम लोग 2 महीने की बात कर रहे हैं, है ना, अप्रैल एंड मई, am I correct? We are talking about April and May. अब now when you look at April and May, अप्रैल में आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स का, और पिछले जो रिवीजन है वो रिवाइज कर सकते हैं। This solving of question paper itself will take around 6 hours for you. 2 hours for solving the question paper and analyzing it for next 4 hours. On same day you can take one more question paper and revise it. जो पहले सॉल्व कर चुके हैं आप, किसी सेक्शन का रहेगा, सेक्शनल टेस्ट का रहेगा, 2 घंटे के लिए रिवाइज कर दो, 8 घंटे का काम हो गया आपको, करंट अफेयर्स का बाकी बचा हुआ 3 से 4 घंटे। Now here I'm also talking about CSAT, so please don't forget it. You will have to keep your CSAT blended here when you are talking about say practice test paper. यहाँ पे practice test paper में आपको CSAT को 2 CSAT papers a week रखना है, जो हम लोग बोल रहे 3 slots, sorry 2 to 3 GS papers, 3 GS papers and 2 CSAT papers। ये आपको इतना dense उसको लेके जाना पड़ेगा at least during second and third slot of your preparation. So this way I think you can manage it. This is too much on a plate, but then probably exam and that too prelims of this level expects you to work that way, right? Micro planning, weekly planning करके रखो। मंथली तो माइक्रो प्लानिंग तो हो गया हमारा, हमने 3 स्लॉट तो कर लिए है ना, अब वीकली प्लानिंग भी करो, तब आपके स्लॉट्स कंप्लीट होंगे 2 महीने के। आपको पता ही नहीं है कि आपने ये वीक में क्या करना था, ये मंथ में क्या करना था बिल्कुल मालूम है, तो हुआ ही नहीं है वीक का कंप्लीट, तो आपका मंथ का प्लानिंग भी कभी नहीं हो सकता। सो मेक इट ऑन अ वीकली बेसिस। ये वीक का टारगेट क्या है, लार्ज मैक्रो प्लानिंग हमारे पास क्लियर है ना। अब जब मैक्रो प्लानिंग हमारे पास क्लियर है स्लॉट्स में, अब देखो कि ये वीक में माइक्रो प्लानिंग में हमें क्या क्या करना है, कौन सी चीजें करनी है मुझे आने वाले 7 दिन में, कौन सी चीजें करनी है मुझे आने वाले 4 वीक में। तो जब 7 दिन का क्लियर है तो 4 वीक क्लियर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। एकदम सिंपल बात है, मतलब इसमें कोई बहुत मैं आपको कोई एकदम आउट ऑफ बॉक्स प्लानिंग बता रहा हूँ ऐसी बात नहीं। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, एकदम सिंपल, जो हमारे पास हमें मालूम है कि हम लोग वीक में क्या करते हैं। आपको मालूम है आप आने वाले 2 महीने के बाद क्या करने वाले पढ़ाई में, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर पढ़ोगे 2 महीने के बाद, नहीं मालूम, कोई नहीं, प्लानिंग नहीं है उस तरह से। आप हो भी अगर प्लानिंग तो आप 2 महीने का पहले नहीं सोचोगे ना, आप ये सोचोगे कि कल मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है ना। तो 7 दिन का क्यों नहीं प्लानिंग बना सकते हम लोग, 7 दिन का भी नहीं बनाना। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो ना, तो आप मंडे से लेके सैटरडे ही आपको बनाना है सिर्फ। संडे तो हमने रख ही दिया है ना करंट के लिए और प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो 7 दिन का बना, 6 दिन का बना, और देखो वो 6 दिन में 7 दिन में क्या मैं एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ क्या, या फिर मैं कर पा रहा हूँ क्या। अगर आप वो कर पाते हो तो ही अगला वीक आएगा,
और उसके बाद अगला वीक आएगा, वैसे ही एक महीना होगा और वैसे ही अगला महीना होगा। तभी हो सकता है अगर आपके पास वीक में, आप एक वीक में क्या करोगे ये आपको अगर मालूम है तो ही ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये मालूम नहीं है तो आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप प्लान्स बिल्कुल बना सकते हो लेकिन वो एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू डू नॉट हैव क्लियर आइडिया लाइक व्हाट आर वी डूइंग। प्लान फॉर 2023 प्रीलिम्स, अगेन यू नो प्रीलिम्स एंड मेंस, अभी आपको ऑप्शनल जीएस आपको बैलेंस करना है ना। आई विल नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, बट देन still overlapping syllabus for मेंस एंड प्रीलिम्स, इसको आप पहले ले लो, राइट। मेंस और प्रीलिम्स का जो ओवरलैप जहां जहां आपको दिखता है उसको आप पहले ले लो, और वो सब्जेक्ट्स को आप जुलाई से खत्म करना चालू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसका एनालिसिस करो। और मैं आपको ये बताऊं कि एनालाइज्ड बुक्स लेके बैठो नहीं सर, आप पेपर लेके बैठो, खुद भी देखो क्वेश्चंस को। कोई आपको कुछ बोल रहा है कि नहीं ये एनालिसिस इस तरह से है, वो उसके हिसाब से है, आप आपके हिसाब से भी एनालिसिस करो। You can definitely take help of different books, you can definitely take help of different mentors and teachers, but then please do it yourself. Unless and until you do it yourself, you won't find in a comfortable position. आपको बिल्कुल नहीं लगेगा वो, you are dependent, तो डिपेंडेंसी रहेगी तो नहीं होगा, आपको खुद बैठना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर के साथ। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसका एनालिसिस चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एनालिसिस थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। आप अभी क्या ले रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप देखो हिस्ट्री के पिछले 10 साल के या फिर 20 साल के क्वेश्चंस मेंस के क्या आते थे जीएस में, है ना। आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, समझ लीजिए आप मास मूवमेंट्स पढ़ रहे हो, गांधीयन मास मूवमेंट, तो मास मूवमेंट के ही क्वेश्चंस देखो, सिर्फ मास मूवमेंट के क्वेश्चन देखो, पहले उसको लिस्ट डाउन करो चाहो तो एक पेपर पे, और फिर जब आप पढ़ोगे मास मूवमेंट्स में तो देखो कि क्या मैं मेरे पढ़ने में ये क्वेश्चन जो पूछे गए इसका कोई लिंक बैठता है क्या, क्या मेरे इतने पढ़ने में, समझ लीजिए एनसीईआरटी से किसी बुक से इतने पढ़ने से क्या मैं ये आंसर कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। तो अगर नहीं कर पाते हो आप तो आपको शायद कुछ और या फिर कुछ अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो ये अगर आप सोचोगे नहीं और ये आप कंटिन्यूस उस तरह से प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। आपको डेफिनेटली लगेगा नहीं प्रिपरेशन तो मेरी हो ही रही है ना। देयर आर पीपल दो से दैट नो द competitive exams has become a great deal of a challenge, and it is a sort of a mirage behind which everybody keeps running. It's not a mirage. It's not something that you cannot see and cannot get hold of. It's definitely not. Definitely not. Where we lack, we keep it, beyond our sight intentionally. हम हमारा कंफर्ट जोन ढूंढते हैं और हम लोग उसमें प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमेशा। हम ये नहीं चाहते कि एग्जाम जिस तरह से पूछता है ना उस तरह से प्रिपेयर करें। हमारा हमेशा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि एग्जाम में मैं जो पढ़ रहा हूँ ना या पढ़ रही हूँ उतना ही आए तो बेस्ट है। ऐसे कैसे होगा? आप क्यों नहीं ये सोचते हो एग्जाम में जो आना है वो मैं क्यों ना प्रिपेयर करूँ? हमारी सोच में अगर फ्लॉज है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इस तरह से देखें। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार बच्चों से बात करता हूँ और बच्चे जब ऑनलाइन भी काफी कमेंट्स में देखता हूँ, तो आप ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करो कि आपको जो चाहिए वो आप प्रिपेयर करोगे और फिर एग्जाम जाके क्लियर करोगे। नहीं, एग्जाम का सिलेबस है, एग्जाम की डिमांड है, वो डिमांड को एड्रेस करो, आप क्लियर हो सकते हो। जब डिमांड नहीं एड्रेस करोगे, 10 साल से प्रिपरेशन करोगे तो फिर कैसे क्लियर होगा? नहीं क्लियर हो सकता। अगर एग्जाम चाहती है आप एनालिटिकल, चाहती है कि आप डायनामिक रहो, चाहती है कि आप करंट अफेयर से चीजों को अपने बेसिस के साथ लिंक करो, अगर आप ये नहीं करोगे और वो भी एग्जाम को जिस तरह से चाहिए वैसे नहीं करोगे, डायनामिज्म नहीं रखोगे आपके प्रिपरेशन में, तो क्लियर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये तो ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता नहीं यार तुम प्रिपरेशन कर लो बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, ऐसे थोड़ी ना होता। प्रिपरेशन वैसे करो जैसे एग्जाम को चाहिए, है ना। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ओवरलैपिंग जो सिलेबस है मेंस और प्रीलिम्स का, वो मुझे लगता है आपको पहले लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको ठीक से एनालाइज करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि जुलाई 22 टू दिसंबर 2022 एवरी संडे वन टेस्ट फॉर प्रीलिम्स और एवरी संडे वन एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताया, दैट यू कैन डेफिनेटली फॉलो। टेक ऑल, इफ यू आर नॉट विलिंग टू गो फॉर टेस्ट, नो प्रॉब्लम। पूरे संडे को बैठ के आप पूरा जो एक वीक के न्यूज़पेपर है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उसके नोट्स बनाओ। इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू गिविंग अ टेस्ट, है ना। तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। जनवरी 23 टू मई 23 एक्सक्लूसिव फोकस ऑन प्रीलिम्स, और यहाँ पे जनवरी की जगह पे हम लोग लेट अस मेक इट दिसंबर, एंड हियर दिसंबर
we will make it November end. Do it, and this is definitely sufficient to give you a sense of completion of syllabus as well as the required focus. So this is in brief. I am intentionally not trying to make it more detailed. The reason being the detailing of this sort of मतलब ये जो कुछ प्लानिंग या फिर स्ट्रेटेजी में मैं ये कुछ बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग इसी तरह से फॉलो करना चाहिए. आपका प्लानिंग हो सकता है. प्लीज सी टू इट कि संडे आप प्रीलिम्स को दे रहे हो आज ही से, अभी से, और फिर मंडे से लेके सैटरडे तक आपको ऑप्शनल और आपका जीएस कैसे डिवाइड करना है ये आप डिसाइड करो. मतलब लेकिन फिर भी लगभग 12 घंटा तो आपको डेली देना चाहिए, 12 से 13 घंटा. तो आप ऑप्शनल को एक पार्ट दे सकते हो डेली और जीएस को एक पार्ट दे सकते हो डेली. कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑप्शनल को कंप्लीट 3 दिन देंगे, जीएस को 3 दिन देंगे. दैट इज अप टू यू, राइट. ये करने के बाद डेली न्यूज़पेपर के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मेंस के कॉन्टेक्स्ट में, उसको भी आपको टाइम देना है. इतना ही बस, बाकी कुछ नहीं. सर कौन सा सब्जेक्ट पहला लेना है जीएस का, कौन सा बाद में लेना है, क्या मैं मेरे ऑप्शनल के साथ जीएस पेपर फर्स्ट लूं या फिर जीएस पेपर 4 लूं या फिर 15 दिन में ऐसे लिखूं. यू डिसाइड इट. यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड. यू नो द वेटेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट, राइट. यू नो हाउ क्रूशियल वाज एसे दिस ईयर इन रिजल्ट. ऐसे के मार्क्स देखो, अब बच्चों के मार्क्स बहुत कम है, काफी बच्चों के कम है. तो क्यों कम है? शायद हम लोग ऐसे को भी ग्रांटेड ले रहे थे, हम लोग शायद ऐसे का प्रिपरेशन वैसे नहीं कर रहे. तो आपको ऐसे भी आपके प्रिपरेशन में ब्लेंड करना चाहिए. एवरी 15 days you can think of writing one essay after reading things or material on the same. ये आपको डिसाइड करना है कैसे. लेकिन मुझे लगता है कि 12 घंटे के आसपास तो आपका रोज का पढ़ाई का टारगेट होना चाहिए. इसको आप 4-4 घंटे के स्लॉट्स में, 3 स्लॉट्स में बिल्कुल आप रख सकते हो. मुझे लगता है 4 घंटे का एक स्लॉट बिल्कुल ठीक ठाक है. 4 घंटे को आप 2 में स्प्लिट कर सकते हो, 2-2 घंटा, एक छोटा सा ब्रेक लेके. तो 4-4 घंटे के 3 एक स्लॉट अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि ठीक है. मतलब उतने इसमें आप डेफिनेटली चीजों को मैनेज कर सकते हो. I hope this is clear, right? So this is, in this way you can have a brief planning for prelims and mains both. Now comes an important aspect here, and this is again with regard to revision. How do you revise and what to revise, right? So if you look at what I have, what I am proposing here is revision is basically reworking. It's not just going through the your notes, right? We have a habit of, no sir, I'm revising and I'll just go through it and my revision is done. No, revision is almost, you can consider that it is almost equal sort of a reworking. Unless and until you take revisions that seriously, you won't find building very well on the subject. So every 15 days or every month one may think of revising. So 15 दिन में एक दिन निकालो, उसमें आपने जितना मेंस का किया उतना करो. या फिर मैंने जैसे आपको बोला कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक प्रिपेयर करो, सैटरडे को रखो आप इसके रिवीजन के लिए और संडे को रखो प्रीलिम्स के लिए. कुछ लोग हैं जिनको वीकली रिवीजन करनी है, बिल्कुल आप कर सकते हो. मंडे टू फ्राइडे जितना आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का या फिर जीएस का किया उसको रिवाइज करो सैटरडे पे. आप देखो, चीजें जब आपको कॉन्क्रीट करते जाना है तो वो आप एकदम से सडनली नहीं सोच सकते कि मेरा एकदम ज्यादा सर पढ़ाई होनी चाहिए. आपको थोड़ा थोड़ा ही टारगेट करना पड़ेगा. बस उसको you will have to make it concrete on a weekly basis. So either you can think of doing it on a weekly basis, or you can think of doing it fortnightly also, right? Once in 15 days. Even that is definitely a workable model. Every month, I think at the end of the month, revising complete month becomes a tedious task. So instead, I would suggest you to go for a weekly revision, right? Maybe every Saturday or as you think so. Through test series in last 1 or 2 months, right? So particularly for prelims and even for mains, right? When it comes to revision, test series becomes one of the best options for revision. Last 1 month में आप test series के through काफी सारे revision कर सकते हो. मेंस की बात करें तो मेंस काफी ज्यादा issue based है ना. तो issue based होने के कारण आप issues को focus करोगे और उसके ऊपर questions लिखोगे, है ना. That should serve the purpose. इतने में काम बिल्कुल definitely होना चाहिए आपका. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है. मतलब इश्यूज को आपने अपने हिसाब से नहीं पढ़ोगे. इश्यूज को आप पढ़ोगे यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से.
तो उससे कम बन सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। So test series in last 1.5 months or maybe 1 or 2 months, you can focus on test series and thereby you can revise, right? Then subjects and current affairs also needs a revision. As I have already said, how can you make the session revision session? So जब मैंने prelims के बारे में बताया आपको, तो उसमें आपने कैसे रिवीजन करना है. So वो जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्लॉट है, सेकंड स्लॉट से आपका रिवीजन और थर्ड स्लॉट में भी रिवीजन चालू होगा. यहाँ पे टेस्ट सीरीज के थ्रू और यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो, सब्जेक्ट्स का भी और करंट अफेयर्स का. दिस इज प्रिसाइजली फॉर प्रीलिम्स. रीडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगेन दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ रिवाइजिंग योर सिलेबस. प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ ये अगेन, है ना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लो, पिछले 20 साल के ले लो, है ना. और सिर्फ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, हिस्ट्री का रिवीजन करा लो उसमें से. सिर्फ पॉलिटी के लो, पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा. सिर्फ ज्योग्राफी के लो, ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाएगा, है ना. ये भी कर सकते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड करके उतने एरियाज को देख के आपके आपके अपने बुक से उसको आप कर सकते हो. हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवीजन्स, हाउ मेनी कैन यू मैनेज टू डू? देयर इज नो अपर लिमिट. 2 रिवीजन झाला सर, आप जितना कर सकते हो करो ना, कोई लिमिट तो नहीं. रिवीजन क्या करेगा? रिवीजन कंसोलिडेट करेगा ना नॉलेज को. रिवीजन आपके स्किल्स को कंसोलिडेट करेगा. यू विल बी इन अ बेटर कंफर्टेबल पोजीशन व्हाइल यू अपीयर फॉर मेंस, और सॉरी अपीयर फॉर योर एग्जाम, वेदर प्रीलिम्स और मेंस. सो कितने नंबर ऑफ रिवीजन्स होने चाहिए? एज मेनी नंबर ऑफ रिवीजन्स एज यू कैन मैनेज टू डू. जितने आप कर सकते हो उतने करो. व्हाट टू रिवाइज प्रीलिम्स के लिए? फैक्ट्स. क्योंकि कंसेप्ट्स जो है ना, once you understand concepts, right, it is understood. What remains of concepts is application, so that will come out of practice. So concept को आपको rarely revise करना पड़ता है. अगर एक बार आपको समझ में आए ना concept, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कोरियलिस फोर्स का कंसेप्ट है, हम लोग अगर ज्योग्राफी की बात करें, और कोरियलिस इफेक्ट बोलते हैं उसको. तो नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में winds or things would be turning towards their which direction? To their right. Now one may by heart this by making mnemonics like NR and in SL, like in southern hemisphere it is turning towards left. ये एक तरीका हो गया. इससे आपको कंसेप्ट समझेगा नहीं. आप कंसेप्ट समझो कि क्यों ऐसा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में when the winds are moving right, they turn to their राइट. ऐसे क्यों है? राइट को क्यों टर्न करते हैं? तो इसके पीछे कारण है ना. आप अगर उसके लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड और उसके साथ साथ अर्थ के रोटेशन का लॉजिक उसमें लगा, तो आपको बिल्कुल वो कंसेप्ट समझ में आएगा. एम आई करेक्ट? राइट. सो कंसेप्ट समझना एक बात है, उसको अप्लाई करना एग्जाम में दूसरी बात है. सो आपको समझने के बाद एप्लीकेशन की जो बात है ना, वो तो प्रैक्टिस से आएगी. तो यहाँ पे बाय हार्ट करने का या फिर रिवाइज करने की बात नहीं होती, यहाँ पे प्रैक्टिस की बात होती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. फैक्ट्स लेकिन आपको रिवाइज करने पड़ेंगे. जैसे पूछा गया था क्वेश्चन, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था कि इनसैट सैटेलाइट सिस्टम में कितने सैटेलाइट्स. अब यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे हो ही सकता है, लेकिन फिर भी आपको यू हैव टू बाय हार्ट, लाइक ओके ठीक है 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, जो भी है, वॉट एवर इज द नंबर, दैट यू हैव टू बाय हार्ट और मे बी यू हैव टू रिवाइज. कंसेप्ट यू हैव टू प्रैक्टिस. कंसेप्ट को आप प्रैक्टिस करो, है ना. फैक्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हो. अब मेंस में क्या है? फिर मेंस में एस्पेक्ट्स या फिर डायमेंशंस है जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो मेंस में क्या कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है जो रिवाइज करना है? बिल्कुल है. केस लॉज है, एग्जांपल्स है, डेटा है जो आप आपके मेंस के आंसर्स में डाल सकते हो, गुड प्रैक्टिसेस देख सकते हो, है ना. ये चीजें आप मेंस के लिए रिवाइज कर सकते हो या फिर बाय हार्ट कर सकते हो. लेकिन जहां तक मेंस की बात है, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इशू and dimensions on the same, you will have to be ready with these dimensions and aspects, right? There is something called as way forward or maybe conclusion for different answers. तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको जो अलग अलग कमिटी के रिकमेंडेशंस होंगे, वो रिकमेंडेशंस को आपको लिस्ट डाउन करना है किसी एक बुकलेट में, है ना. एनजीओज है या फिर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, कुछ लॉज है, उसके प्रोविजंस है, कुछ केस लॉज है,
उसके प्रोविजंस है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जो स्कॉलर्स है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उनके ऑब्जर्वेशंस है, इन चीजों को कलेक्ट करके रखें पहले ही किसी एक नोटबुक में, और इनको आप रिवाइज कर सकते हो। इनको रिवाइज करोगे तो ये सभी चीजें आप रेडीली आपके आंसर में डाल सकते हो। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज फ्लैश फॉर अ बॉडी ऑफ योर आंसर। विदाउट दिस योर आंसर वुड बी जस्ट स्केलेटन। It may mean the same thing, but without this body, without this flesh, it won't make any sense, and you won't be able to, get good marks. मार्क्स आपको सिर्फ आपने स्ट्रक्चर लिखा इसके लिए नहीं मिलते। मार्क्स आपको उसमें आपने स्ट्रक्चर के बाद आर्ग्यूमेंट्स और उसके साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस विद फैक्ट्स एंड केस लॉज एंड अदर रिक्वायर्ड सपोर्टिंग मटेरियल लिखा, इसलिए मार्क्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? सो दैट यू कैन डू। सो रिवीजन में हम लोग अगर मेंस की बात करें या फिर प्रीलिम्स की बात करें तो मुझे लगता है कि इस तरह से रिवीजन को देखना चाहिए। क्या रिवाइज करना ये भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है सर नहीं चलो मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, मेरा जीएस पेपर 2 देना है, मैं लक्ष्मीकांत रिवाइज कर दूं। क्यों? शायद एक क्वेश्चन आएगा जो आप शायद लक्ष्मीकांत से एड्रेस कर पाओगे, बाकी तो करंट में आ रहा है। तो आपके पास इश्यूज एस्पेक्ट्स होने चाहिए, तो ही आप वो चीजें, मैं वही बोल रहा हूँ, स्टेइंग अट्यून्ड टू और विथ एग्जाम इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एंड ओनली अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मेक योर स्ट्रेटेजी आप उसी तरह से बनाओ। अदरवाइज स्ट्रेटेजी बनाने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा कोई मैजिकल और मैजिक की नहीं है कि आपने उसको यू यूज्ड इट एंड सडनली यू गॉट रिजल्ट, ऐसे नहीं होगा। दिस इज अ लेंदी प्रिपरेशन, राइट? फोकस प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे हम लोग प्रिपेयरिंग यूपीएससी मेंस, वैल्यूएबल कंपेनियन इन द प्रिपरेशन, क्या हमें देखना है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव है, इशू बेस्ड है ना, इशू बेस्ड प्रिपरेशन फॉर मेंस लेवल। मतलब क्या, जैसे अभी हम लोग अगर वापस लेते सेम एग्जांपल है ना, एंटी डिफेक्शन इशू है ना, हमें वहां के उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाना, लेकिन आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए चलो महाराष्ट्र में ये केस हो रहा है तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इशू, ये हम लोग हमारे लिए एग्जांपल हो गया। कर्नाटक में हुआ था वो एग्जांपल हो गया, है ना। फिर राजस्थान में होना ही था लगभग, मध्य प्रदेश में हो गया एग्जांपल। हमारे पास क्या एग्जांपल्स है 4-5 जो हम लोग इमीडिएटली कोट कर सकते हैं एग्जाम में अगर जरूरत पड़े, जो जरूरत पड़ती है। तो आपका काम क्या है? आपको इशू बेस्ड प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ? वो इशू के लिए सपोर्टिंग एग्जांपल्स क्या मैंने तैयार करके रखे क्या वो। अब इसके साथ साथ फिर एस्पेक्ट्स का प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? तो अब देखिए ना, एंटी डिफेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो क्या एस्पेक्ट्स आएंगे इसमें? आएगा स्पीकर के पावर्स, इसमें आएगा योर सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, इसमें आएगा फ्लोर टेस्ट, इसमें आएगा अमेंडमेंट टू द एक्ट, राइट, प्लस लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस कुछ है वो आएंगे उसमें। अब ये देखा जाएगा कि 10th शेड्यूल का आज का पोजीशन क्या है, 10th शेड्यूल में कौन सी चीजें क्लियरली मेंशन की हुई है, एंटी डिफेक्शन का पर्पस का क्या था, ये सभी कुछ ये चीजें हैं जो एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या एस्पेक्ट्स है, कौन मेजर रोल प्ले करता है, क्या क्या लैक्यूनाज रहे वो एक्ट में, क्या क्या इश्यूज है वो एक्ट, वो उसके बारे में बात करना मतलब एस्पेक्ट्स पे बात करना। उसका क्या इफेक्ट हुआ, हाउ हैज द एंटी डिफेक्शन लॉ परफॉर्म्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट अराउंड 2 decades or so, कैसे काम किया उसने, क्या वो सेटिस्फैक्टरी है, तो उसके ऊपर हमें बिल्कुल हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो हो गया इशू बेस्ड प्रिपरेशन। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर ऑल जीएस पेपर्स। ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो यू मे कंसीडर दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ पेपर सेकंड। तो फूड सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस को कनेक्ट करके शायद हो सकता है पेपर सेकंड में पूछा जाए। तो इस तरह से हमने टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर फूड सिक्योरिटी के लिए पेपर सेकंड में क्वेश्चन दिया, टेस्ट सीरीज में दिया। अब मैं इसको समझा रहा हूं आपको कि ये कॉमन टॉपिक्स के लिए और पूरे इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या है। यूपीएससी आस्क्ड ऑन द सेम टॉपिक ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन इन पेपर 3, ऑलमोस्ट सेम, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन हमने पेपर 2 के टेस्ट सीरीज में दिया हुआ उसी तरह का क्वेश्चन आप देखोगे कि पेपर 3 में उन्होंने उसी साल पूछा, पेपर 2 में नहीं पूछा। अब पेपर 3 में भी तो आप फूड सिक्योरिटी और पीडीएस की बात करोगे, तो पीडीएस फूड सिक्योरिटी अगर है पेपर 3 में तो क्यों ना आप फूड सिक्योरिटी एक्ट को पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिए तैयार करके रखो, उसके लिए मटेरियल तैयार करके रखो। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या मतलब होगा? जैसे गवर्नेंस वाले टॉपिक से पेपर सेकंड में, तो जरूरी नहीं है कि वो पेपर सेकंड में ही पूछा जाए ना। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, उसमें आपको पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है।
जा सकता है। हो सकता है आपको पेपर 4 में भी आए, पेपर 4 में तो डायरेक्ट ओवरलैप आप देखोगे, है ना। गवर्नेंस और सिटी गवर्नेंस आप पेपर फर्स्ट में देख सकते हो, है ना। अर्बनाइजेशन एंड इश्यूज पर्टेनिंग टू अर्बनाइजेशन, क्या वो गवर्नेंस का पार्ट नहीं? बिल्कुल है। अर्बन सिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन सिटीज। सो आपको देखना कैसे है, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा उसको इंटीग्रेटेड वे में अगर देखोगे तो पहली बात, जीएस के मेंस के सिलेबस का स्कोप आप कम कर पाओगे। उसके लिए प्रिपरेशन करते वक्त आप एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फोकस प्रिपरेशन कर पाओगे, राइट। दैट विल हेल्प यू, राइट, एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू कंसोलिडेट योर मटेरियल फॉर ऑल द पेपर्स इंक्लूडिंग एसे, है ना। सो वो इंटीग्रेटेड मैनर में मुझे लग रहा है कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। कीपिंग डेटा, केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स रेडी टू यूज, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप अलग से डायरी बनाओ ना, या फिर आप जब प्रीलिम्स का हर संडे को करोगे एक डायरी, उसी में एक वही डायरी में या फिर वही नोटबुक में आप पीछे मेंस के लिए चीजें लिखो। आप प्रीलिम्स का करोगे ना संडे को, है ना, उसमें मेंस के लिए लिख के रखो। कुछ आया समझो, पाई चार्ट दिख रहा है आपको न्यूज़पेपर में जिसका सोर्स है स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, वो पाई चार्ट को आप मेंस के लिए लिख के रखो आपके नोट्स में। समझो सेक्स रेशो पे पाई चार्ट है, या फिर पॉवर्टी पे पाई चार्ट है, या फिर एजुकेशन के ऊपर पाई चार्ट है, स्टेट वाइज डायनामिक्स कुछ दिए, जो भी है पाई चार्ट या फिर जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखता है, व्हाई डोंट यू कट इट, और यू कैन कट इट एंड पेस्ट इट इन योर नोटबुक जस्ट फॉर द पर्पस कि आप वो लिखो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिखो, कट पेस्ट नहीं करो, क्योंकि लिखने से यू गेट, यस इट इज देयर इन योर ब्रेन देन, और उसको रिवाइज करो फिर एंड देन राइट। जब आपके पास मटेरियल हैंडी तैयार ही है तो आप कभी भी कर सकते हो ना, क्या डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी नहीं। तो ये रेडी टू यूज होना चाहिए। इफ इट इज नॉट रेडी टू यूज, फॉरगेट अबाउट मेंस एंड मेंस प्रिपरेशन। रीडिंग इज नॉट मेंस प्रिपरेशन, जस्ट रीडिंग इज नॉट मेंस प्रिपरेशन, गेटिंग इट रेडी, एवरीथिंग इज मेंस प्रिपरेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक if you look at a chef who is cooking a particular dish, right, he won't just speak about it, he would have all things ready on his table, right, everything is ready, and he would only uh, present it in front of you. It's not that he comes to the, like if you have been habitual of you know looking at such shows, right, wherein the chef presents their skills of cooking, right, you can see that they are almost ready with all ingredients that they require for that particular recipe. So why are you like, I'm just trying to give you an example, right, a metaphorical example wherein you can simply relate your preparation. You do have different ingredients to put here in your mains concept. So are you ready with those ingredients? If you're not, forget about the recipe then. Are you getting it? So जो है ना खाने में जो लगता है नमक हल्दी चीजें छोटी मोटी, वो सभी तैयार है ना, तो तैयार है तब आप डाल पाओगे ना। जो तैयार नहीं है तो आप ढूंढने जाओगे, तब तक तो फिर रेसिपी जल जाएगी आप, मतलब तब तक टाइम चला गया आपका मेंस के राइटिंग में। तो ये चीजें मुझे लगता है कि रेडी टू यूज होना चाहिए, आपको उस तरह से ही उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। So understanding keywords in questions and their role in answer, yes definitely, now this is also expected. क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? जैसे मैं अगेन इफ आई टेक द सेम example, if I may take the same example, you are advised to make, let us say, biryani, right, but ultimately you ended up making dal khichdi, makes no sense. You have same ingredients probably, but you couldn't manage to make it, so नहीं मार्क्स मिलेंगे ना। ये बात से कोई ये आर्ग्यूमेंट आप करोगे कि नहीं सर मैंने तो बिल्कुल वही चीजें लिखी है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि मेंस में हम लोग क्या गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं हम लोग, वही चीजों को यूज करते हैं लेकिन हमारी तरीके से नहीं, वो तरीके से आप नहीं कर पाओगे। आपको जो एक्सपेक्टेड है ना वो करो। बात समझ में आ रही? तो वो कहाँ पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको जो कीवर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चन में, डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, एनालाइज, एग्जामिन, थ्रो लाइट ऑन, है ना, डू यू एग्री, ये जो कीवर्ड्स है उसके अंडरस्टैंडिंग में आपको क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। You must understand the keywords and only then you will be in the position to answer the questions properly. और उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए बोला वैसे मेंस के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट पेपर करोगे। ये चीजें करोगे तो मुझे लग रहा है कि then you can definitely see that your mains is working in a well manner. So this is in brief about how one should prepare for mains.
करंट अफेयर्स अगेन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, न्यूज़पेपर मंथली कंपाइलेशंस बिल्कुल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूज़पेपर लेकिन आप रोज करोगे ही। तो क्या सर हम लोग वीडियो देखें जो ऑनलाइन रहते हैं? देखो कोई लिमिटेशन नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपकी नजर से पढ़ो, किसी और के नजर से नहीं। नहीं सर 2 घंटा लगता है, मैं बोल रहा हूँ 3 घंटा भी वर्थ है पढ़ने के लिए। दो ना टाइम उसको, क्वालिटी टाइम दो। देखो यूपीएससी के क्या क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं आ रहे ना? अगर आ रहे तो हमें क्यों नहीं देना है टाइम, है ना? ये मुझे लगता है कि this is all about laziness. I have seen people, students, those who want to be dependent on the material, external source. कोई पढ़ा है हमें, हम लोग कर लेंगे, नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, रिलीजियसली पढ़ो, डेली पढ़ो, जरूरत है वो एग्जाम में। नोट्स फॉर करंट अफेयर्स हैंडी टू रिवाइज, ऐसे बनाओ जो आप रिवाइज कर सकते हो। दूसरा न्यूज़पेपर लिख के नहीं रखो अपने नोट्स में, if we do that won't help. करंट अफेयर्स इंफॉर्मेटिव, कंसेप्चुअल, दोनों तरीके करो इसमें। करंट में भी जहां पे फैक्ट्स है, जैसे मैंने अभी बोला, फैक्ट्स है, एग्जांपल्स है, केस लॉज है, ये इंफॉर्मेटिव है। कंसेप्चुअल, कोई कंसेप्ट है, अभी रिसेंटली समझ लीजिए कि आरबीआई ने कोई नया जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था, नया कंसेप्ट है, नई बात है, तो आप उसको कंसेप्चुअली आप लिख के रखो। बात समझ में आ रही है ना? कोई नया स्कीम आ गया, इंफॉर्मेटिव है। कोई नया लॉ है, कोई अमेंडमेंट हुआ, कंसेप्चुअल पार्ट है पॉलिटी में। ये चीजें आप उस तरह से करंट को भी डिवाइड करो, एक इंफॉर्मेटिव पार्ट अलग रखो, एक कंसेप्चुअल पार्ट अलग रखो, जो आप लिख सकते हो आपके नोट्स में। और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये डेली करना है ना आपको, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी चीज है। लगभग 2 मंथ्स मैं अगर बोलूंगा अगर करंट अफेयर्स के लिए, सो फ्रॉम बुक्स टू बेसिक्स टू करंट। पहले जो इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन के, वो बुक्स और बेसिक्स से करंट की तरफ जाएंगे। जिनको ऑलरेडी, जिन्होंने प्रिपरेशन किया हुआ है, वो पहले करंट से बेसिक की तरफ जाएंगे। जैसे अभी एंटी डिफेक्शन के लिए इशू चल रहा है, आप देख रहे हो करंट में, तो एक जो पहले से ही 3-4 साल प्रिपरेशन कर रहा है, वो करंट में देखेगा और फिर बुक या बेसिक में जाके एंटी डिफेक्शन की कुछ चीजें देख लेगा, है ना? जो अभी बेसिक्स कर रहा है, वो बेसिक्स करेगा और फिर करंट में सर्च करेगा कि कौन से टॉपिक से जो मुझे लग रहा है कि अभी करंट में क्या चल रहा है उसका अपडेट होना चाहिए। आप लोग जो those who have been already preparing for years together, they can think of preparing it from current aspect, पहले करंट और फिर बेसिक्स। उस तरह से मुझे लग रहा है कि इस चीज को देखना चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच, क्वेश्चन पेपर्स, बेसिक्स एंड करंट अफेयर्स। आपका प्रिपरेशन ये तीनों चीजों से, these 3 pillars must be there in your preparation. क्वेश्चन पेपर्स मैंने बोला, बेसिक्स मैंने बोला, और करंट अफेयर्स। इसके सिवाय यूपीएससी में और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती आपको, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, हम इधर बेसिक्स करेंगे या फिर करंट करेंगे या फिर क्वेश्चन पेपर करेंगे। हम तीनों एट अ टाइम उतने ही सिंसियरिटी से नहीं करते हैं। वो अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको, यू विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट अबाउट एग्जाम। बहुत नजदीक जाते हैं हम लोग एग्जाम के। Yes, and there is then last point in today's discussion is about psychological aspects. The most important thing, trust on study material. Sir, या क्लासचे यांचे मिळतात त्यांनी I get the करंट अफेयर नोट्स, कौन से यूज करो? अरे आपके खुद के यूज करो, और कोई एक पकड़ लो। आपको जो भी लगता है कि ये करंट अफेयर का कंपाइलेशन मेरा कवरेज ज्यादा देता है और अच्छे से देता है, उसको पकड़ो और उसके ऊपर लिखो या फिर उसको यूज करो। ट्रस्ट क्यों है? ट्रस्ट इश्यूज काफी बच्चों में होते हैं। सर नहीं, वो एनसीईआरटी पढ़ना ही है क्या? क्या एनसीईआरटी के कोई नोट्स पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा क्या? क्यों चलेगा भाई? तो आपको 2-3 अटेम्प्ट प्रीलिम्स आपका नहीं क्लियर होता तो चलेगा आपको? तो नहीं चलेगा ना, मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू गेट थ्रू। सो क्यों ना हम लोग, व्हाई नॉट टू बी दैट सिंसियर एंड सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन? तो मुझे लगता है कि स्टडी मटेरियल की जब बात करें तो एक अच्छा सेट ऑफ स्टडी मटेरियल देखो, उसके ऊपर विश्वास रखो, उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करो थरली, और उसके बाद आगे की बात कर सकते हैं, है ना? एंजाइटी, फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस कम्स ओनली बिकॉज ऑफ, आई फील, ओनली बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर डेडिकेशन टुवर्ड्स प्रिपरेशन। आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, आपको डिसिप्लिन नहीं कर पाते हो, तब आपके पास फिर एंजाइटी होती है, फियर होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी इस चीज से नहीं होता कि सर
मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, इससे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। आप पढ़ो उसको, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, फैकल्टी मिल जाएंगे आपको चीजों को समझाने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको कोई समझा नहीं सकता। कर ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन कंसेप्ट्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें। क्या आप उतना डिलीजेंटली बैठ के करते हो क्या? क्या आपके पास, क्या हमारे पास, ये देखना चाहिए हमें, क्या हमारे पास रोज 12 घंटे देने का डेडिकेशन है क्या? अगर आप बैठ पाओगे ना तो आप आपकी नजर में खुद ही उठोगे इतना ऊपर कि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं होगी। हाँ, फिर भी इतना करने के बाद सर समझ में नहीं आ रही चीजें, तब आप जा सकते हो किसी फैकल्टी के पास, आपके मेंटर के पास, आप ऑनलाइन देख सकते हो, तो यू कैन डेफिनेटली गेट। ऐसी बात नहीं है कि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो सकते। तो एंजाइटी और फियर क्यों है और क्यों लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है? काफी बार हम जो प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने एग्जाम के डिमांड को हम हमारे प्रिपरेशन का पार्ट नहीं समझते। क्वेश्चन पेपर को हम लोग रोज नहीं पढ़ते, इसलिए वो फियर और एंजाइटी है। फियर ऑफ अननोन है ना, हमेशा नोन चीजों का फियर नहीं होता। तो अननोन क्या है? एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, पता नहीं क्या पूछा जाएगा। अरे कैसे पता नहीं? इतने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो है ना। क्यों पता नहीं? आपने देखे नहीं, इसलिए आपने देखा नहीं उसको, आपने उसको उतना डिलीजेंटली एनालाइज नहीं किया, इसलिए पता नहीं और इसीलिए फियर है। एवरीथिंग अंडर सन, तो आपने देखा यूपीएससी का सिलेबस, वहां पे लिखा हुआ है कि चारों पेपर में एवरीथिंग अंडर सन, एक लाइन में सिलेबस खत्म कर देते। वो सिलेबस दिया है ना डिफाइन करके, और आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, कोई एक क्वेश्चन को सिलेबस के बाहर नहीं जाता। सिलेबस के पॉइंट और करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आए। अगर वो लिख के देते ना कि एवरीथिंग अंडर सन, तो मैं समझ रहा हूँ कि फियर फैक्टर डेफिनेटली हो सकता है। वो अगर कभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पब्लिक में देते ही नहीं, लोगों को देते नहीं, बच्चों को, तब मैं समझ सकता हूँ कि अरे क्या पूछेंगे मालूम नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझो यूपीएससी सो ओपनली कंडक्टिंग एग्जाम, दे आर वेरी क्लियर विद द प्रोसेस आल्सो, दे आर लेटिंग यू नो दैट सी these are the questions, we are not ready to go close to the exam, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में lack of satisfaction on study material, because this happens because we take inputs from number of people, है ना। अरे हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र का, नहीं वो बड़ा बुक क्यों पढ़ रहे हो, इतना टाइम कहाँ है? वो नहीं पढ़ो, कोई नोट्स पढ़ लो। नोट्स पढ़ के जाएंगे तो बैक ऑफ द माइंड रहेगा, अरे यार बुक में अगर कुछ था एक्स्ट्रा तो मैंने नहीं पढ़ा। कहाँ से आता है सेटिस्फेक्शन स्टडी मटेरियल का? आप अगर क्वालिटी बुक्स पढ़ो और उसके बाद अपने नोट्स तैयार करो, उससे सो ये आपको बिल्कुल, आप में से काफी लोगों को शायद जो listening to or watching this webinar online, they may find it, oh no sir, this is very old school and we may refer to only notes and still get through. Try that, no problem. Try that. If you get through, you're lucky then. If you don't, you'll have to bounce back to the basics and your books. क्वेश्चन का डायनामिज्म देख के मुझे नहीं लगता कि आप कोई सिर्फ नोट्स के ऊपर आप ये कर सकते हो। क्यों ना पढ़े हम लोग, अगर अपॉर्चुनिटी है तो अच्छी चीज है, और थोड़े एफर्ट्स लेंगे तो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये सभी चीजें मुझे लगता है कि हमें हमेशा आदत होती है, साइकोलॉजिकली हमें आदत होती है आसानी से कुछ बन जाए हमारा तो बेस्ट है। तो आसान तरीका ही ये है कि आप पहले से ही अच्छी चीजें पढ़ो और उनका प्रिपरेशन करो। आसान तरीका मुझे नहीं लगता कभी ये होगा कि 4 या 3-4 साल आप इसमें इन्वेस्ट करो और उसके बाद सिर्फ नोट्स पढ़ते रहो और फाइनली 4 साल के बाद आके कोई बुक पढ़ लो। ये कोई आसान तरीका नहीं है। तो आसान तरीका हमेशा यही होगा, जो क्वालिटी मटेरियल पढ़ो, उसको एग्जाम को जिस तरह से चाहिए उस तरह से नोट्स निकालो। पोस्टपोनिंग टारगेट्स, यस ऑफ कोर्स दिस विल हैपन इफ यू आर नॉट सीरियस इनफ। मैंने बताया ना आपको, टारगेट, पहली बात तो टारगेट इतने नहीं बनाओ कि आप एक दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में कंप्लीट ना करो। उतना ही देखो जितना आप देख पाते हो। यहाँ से आगे 7 दिन का आइडिया है ना आपके पास क्लियर? आपके पास ये बिल्कुल 7 दिन का क्लियर होगा कि नहीं मैं कल क्या करूंगी या फिर करूंगी 7 दिन में क्या करूंगा या करूंगा। उतना ही बनाओ ना प्लान, उतना प्लान बनाओ, बस उसको एग्जीक्यूट करो। आपको मालूम है कि आपने इतना टारगेट रखा था, वो आपको 7 दिन में, आप 6 दिन में ही कंप्लीट कर लिया आपने, है ना। तो अगले 7 दिन के लिए टारगेट थोड़ा सा बढ़ाओ, वो जब कंप्लीट होगा तो उस हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग करो। वही वो पोस्टपोन इसलिए होता है क्योंकि टारगेट ही हमारे एकदम अमेजिंग होते हैं। सर 7 दिन में मैं ये बुक कंप्लीट करूंगा, बुक कंप्लीट करना टारगेट था ही नहीं ना कभी। एग्जाम आप सिलेबस देखोगे तो नोटिफिकेशन देखोगे तो वहां पे लिखा है कहीं कि 7 दिन में जिसने ये बुक कंप्लीट किया उसको हम लोग क्वालिफाई करेंगे, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं। एग्जाम क्या डिमांड करता है? ये सिलेबस है भाई, तुम तुम्हारे हिसाब से पढ़ लो उसको,
तुम 7 दिन में कंप्लीट करो, 1 महीने में बुक कंप्लीट करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना इससे है कि क्या तुम लिख पाओगे अपने मेंस में, हमने जो पूछा उसके हिसाब से लिखो। तो 7 दिन में तुमने पढ़ लिया कि 10 दिन में पढ़ लिया, या फिर किसी ए न्यूज़पेपर से पढ़ा कि वो न्यूज़पेपर से पढ़ा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। पोस्टपोनिंग क्यों करते हैं हम लोग? सेल्फ असेसमेंट, हाउ एंड व्हेन, ऑन अ मंथली बेसिस सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगा वीकली बेसिस पे। किस हाउ में क्या आता है, क्या एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है कि मेरे पढ़ने में? व्हेन, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी 15 डेज। इसका बाकी कोई यार्डस्टिक नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही आपके एनालिसिस का, सेल्फ असेसमेंट का सबसे बड़ा पिलर होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपेयरिंग विथ फेलो एस्पिरेंट्स। आप दे रहे हो ना एग्जाम, आपके फ्रेंड थोड़ी नहीं दे रहे, वो दे रहे तो उनका एग्जाम दे रहे। कंपैरिजन क्यों चलता है? क्योंकि हमें अंडर कॉन्फिडेंस है, हमें फेथ नहीं है जो हम लोग करते हैं उसको। सर वो किसी ने ज्योग्राफी माजिद हुसैन से पढ़ लिया, जरूरी है क्या पढ़ना है क्या? वो एग्जाम में बोला है कि यूपीएससी ने सिलेबस में कि वो माजिद हुसैन से ही पढ़ना जरूरी है? अगर एग्जाम यूपीएससी के सिलेबस में अगर लिख के देता है माजिद हुसैन से ही पढ़ो, उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग वही पढ़ लेंगे। यूपीएससी बोलता है कि भाई ये सिलेबस है, इसके पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए, आप कौन से सोर्स से पढ़ रहे हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। समझना जरूरी है ना, सोर्स थोड़ी जरूरी है। सोर्स वो होगा जो ऑथेंटिक है, जो आपको उतनी कैपेसिटी दे सकता है वो एग्जाम समझने के लिए। सो कंपैरिजन, sufficiency and insufficiency of preparation, that absolutely depends on the fact that whether you are in a position to answer the test series questions or not. अगर आप कर सकते हो तो probably sufficient है। कभी कभी भी सिचुएशन, कभी भी आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, या आप तब बोल सकते हो जब आप आज के डेट में करंट एस्पेक्ट्स और करंट इश्यूज को एग्जाम में एड्रेस कर पाओगे। जब जब आप ये कर पाओगे तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट है। दैट्स ऑल। So that's all I wanted to tell you or share with you so far as strategy is concerned, or sort of a seminar on decoding UPSC exams is concerned. So it is not about decoding anything. It is basically preparing yourself on a right path, and that itself is a strategy. So the major takeaway, if there is anything, from this lecture, is basically you will have to trust yourself and always stay aligned with what exam demands, and nothing more than that. इसके beyond तो कुछ नहीं, right? So thank you so much for attending, all those who have attended this lecture online, right? Thank you so much. You are all welcome for your queries here in Unique Academy. Thanks a lot for today. Nilesh?